an angel full of magic and power and pure sweet love. I see the goodness in you. I see the wisdom in you. I see the strength in you. And so it is. I see the joy that's in you. I see your light shining through. I see the love that's in you. And so it is. I can see it. It's right there before me. I can feel it deep in my soul. I just know it, that you are an angel full of magic and power and pure sweet love. I see the grace that's in you. I see the courage in you. And I see the heart that's in you. And so it is. And I see the beauty in you. I see the power in you. I see the greatness in you. And so it is. I see the beauty in you. I see the beauty in you. I see the power in you. I see the power in you. And I see the greatness in you. I see the greatness in you. And I see the goodness in you now. I see the goodness in you. And I see the wisdom in you. I see the wisdom in you. Oh, I see your strength, your strength. I see the strength in you. And I see your joy, joy, joy. I see the joy in you. And I see your light shining, light. I see the light in you. And I feel the love that's in you. I see love in you. And I see the grace that's in you. I see the grace in you. And I see the courage in you. I see the courage in you. And I see the heart in you. I see the heart in you. And so it is. And so it is. And so it is. And so it is. Thank you. 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 I promise in this moment to keep my heart wide open. With every breath I take, I'm grateful. I promise in this moment to keep my heart wide open. With every breath I take, I'm grateful. I promise in this moment to keep my heart wide open. With every breath I take, I'm grateful. I am grateful. I am grateful. I
my heart wide open with every breath I take. I promise in this moment to keep my heart wide open with every breath I take. I'm grateful. I am grateful, grateful. I am 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 grateful. Thank you. I want to say thank you. Thank you. Thank you. 'Cause I'm so grateful. So grateful. Oh, grateful. I'm so grateful. So I want to say thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. Thank you for my friends, Spirit. Thank you for my friends. Thank you for my friends, Spirit. Thank you for my friends. My wonderful, my wonderful, my wonderful friends. My wonderful, my wonderful, my wonderful friends. Now thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for. So, Namaskar everyone. Thank you for joining. And I thought let's start the session with gratitude. इस एनर्जी की क्या ही कहना, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं है. द मोर यू आर ग्रेटफुल, द मोर यू स्टार्ट रिसीविंग थिंग्स इन योर लाइफ. सो विद दिस विल जस्ट टेक यू टू द टॉपिक टुडे. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. Now, this is all about emotional intelligence. So, let me just stop share over here and let me talk about something emotional intelligence. Yeah. So, all, one second, sorry. Yeah. Okay. So, emotional intelligence. I know we have, heard this.
word emotional intelligence a lot when we were studying. At least मेरे केस में क्या था कि जब मैं एमबीए कर रही थी उस समय काफी डिस्कशंस होता था अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. बट देन द अंडरस्टैंडिंग बेस वो क्या था वाज ऑल अबाउट हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस. एंड आज की जो अंडरस्टैंडिंग है और उस समय की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. बिकॉज जब हमें एमबीए के समय हमने जब ये टॉपिक पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि हाँ इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स विद सेल्फ एंड अदर्स. हाउएवर वी वर प्रैक्टिसिंग दोज टूल्स विच वाज ऑलवेज एक्सटर्नल टू आवर एग्जिस्टेंस. और आज जब हम मेडिटेशन के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे सो इट विल बी ऑल अबाउट विद इन आवर सेल्फ बिकॉज एज आई से ऑलवेज द ओनली वे आउट इज विद इन. और जब हम कहते हैं कि हर चीज हमारे अंदर से शुरुआत होती है तो डेफिनेटली जो लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही होती है. तो आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस. आई एम श्योर आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में भी है और पहले भी था काफी सारा था पहले. अब तो हार्डली मतलब एक या दो ऐसे रिलेशनशिप्स है जहां पर अभी भी चीजें समझने को रहती हैं कुछ ना कुछ. बट आई एम श्योर आप सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग होंगे जिसके लिए आप जब भी सोचते होंगे तो लगता है इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. वो ऐसा क्यों है. एंड देन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप कुछ भी कहो तो वो तुरंत ब्लेम जो है वो अपने एग्जिस्टिंग इमोशनल स्टेट का पूरा ब्लेम जो है वो बाहरी आपकी वजह से ये हुआ उसकी वजह से ये हुआ बारिश की वजह से ये हुआ. बट वो कहीं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको वो समझ नहीं होती. बट ऐसे लोग हमारे आसपास हमेशा होते हैं जो हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं एनी एक्सटर्नल सिचुएशन को. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं और कहीं पे भी उनके हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर चीजें नहीं होती है तो वो दे शो देयर इमोशंस राइट. दे इधर क्राई और दे हाउल और दे जस्ट शट देमसेल्व्स इन अ रूम और डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल आउटबर्ट्स. एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस आई वुड से. देर आर पीपल जो आप चाहे कितना भी उनको समझाने की कोशिश कर लो दे विल नेवर लिसन टू यू. एंड दे आर लैकिंग एम्पथी. एम्पथी क्या होता है कि आप समझते हो दूसरों को राइट बट देर आर पीपल जो आपको नहीं समझते. वो बस दे आर नॉट सच अ गुड लिसनर और इसलिए वो अपनी बातें ही रखना जानते हैं. अ लॉट ऑफ कंट्रोलिंग नेचर फॉर दैट पर्सन. सो ये सारे जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आई एम श्योर कि आज की डेट में मोस्टली सभी के लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं ऐसे लोग होते हैं ऐसे सिचुएशंस होते हैं राइट. और फिर इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं. देर आर पीपल हु आर नॉट इवन अवेयर अबाउट देयर इमोशंस एक्चुअली. उनको ये नहीं पता कि इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं. हर इमोशन का एक फ्रीक्वेंसी लेवल होता है. देयर मेनी पीपल हु डोंट नो अबाउट इट राइट. वी हैव बीन डिस्कसिंग इट in the class and that's why we also know about it. So emotional triggers उनको नहीं समझ आता. Immediately वो conclusion में जन्म करते हैं. बाहर कोई भी कुछ भी कह रहा हो वो उनको बुरा लग जाता है और फिर वो नेगेटिविटी के अंदर वो ये हो जाते हैं. उनका ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और वो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं. और फिर वो कहते हैं कि मुझे लोगों ने नहीं समझा. आई एम फीलिंग मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स राइट. सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि आपको खुद के वीकनेस खुद के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता. आपको ये नहीं पता कि आपके इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं. आपको ये नहीं पता कि आपके चाइल्डहुड से जो भी चीजें होती रही हैं कहीं ना कहीं इमोशनली हमें इम्पैक्ट कर रही है. और उसी की वजह से जो हमारा रिलेशनशिप खुद के लिए है और जो हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ है वो इम्पैक्ट होता है. हम जैसे बिहेव करते हैं देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. और साथ साथ हम अपने डर को कैसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या हम अपने डर को समझते हैं और अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and manage your own emotions as well as the emotions of others. Okay, and directly, indirectly, this is a very scientific definition, but honestly, it's all about managing your own emotions with yourself and people who are outside and around you. So that's why a very, very important topic, and I know many of you must be aware about it, that Dr. Daniel Goleman, who's a
वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, राइट, ऑथर और इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं थे वो। तो बेसिकली उन्होंने ये पूरा का पूरा टॉपिक पे डिस्कशन शुरू किया इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लीडरशिप, okay, effective leadership, like what are the competencies which are needed in emotional intelligence for effective leadership. So we were not going to get into the corporate lingo right now, but हाँ, जो भी हमारे अंदर से शुरुआत होती है वो हम डेफिनेटली समझ पाएंगे। और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हम खुद को बेहतर समझ पाए, हम खुद से बेहतर बातें कर पाए, हम दूसरों से बेहतर बातें कर पाए, हमारी जो रिलेशनशिप्स है खुद के साथ और दूसरों के साथ वो अच्छी हो जाए, राइट? बिकॉज वी हैव गॉट दी सोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिससे इश्यूज है, तो वो भी आपके हाथ में ही है डेफिनेटली। सो लेट मी जस्ट पुट द स्लाइड, सेकेंड। ओके, so you can see on the slide today many topics. I'm sure word wise तो हम सबको पता है, but exactly है क्या ये meditation के perspective से, this is very important. मेडिटेशन इंक्रीजेस इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सब ने थर्ड या फोर्थ क्लास में ही समझा कि किस तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो अच्छे से रेगुलेट हो पाता है। जो हमारा इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन है, और हिपोकैम्पस है, ये दोनों इजीली मैनेज हो पाते हैं। वहां पुराने रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, नए रिकॉर्ड्स आ जाते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और फिर जब हम हमारा जो एमिगडेला है, जो हमारा इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जब वो किसी चीज में रिएक्ट करना चाहता है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट? ब्यूटिफुली पॉज लेकर वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। So this is what is emotional intelligence. The back end is definitely we are able to manage the amygdala, but इसमें क्या क्या चीजें हैं, right? So self awareness, you can see expression, self expression, inspiration, then you have empathy, and then you have engaging. Okay, so these are the major five components of emotional intelligence. Now let me just take you through each one of them. So what is this? Is basically, which we mean that an individual is more self-aware, an individual is more self-expressive, an individual is more inspired, empathetic, and engaging. Okay, so what is self-awareness? Self-awareness हम सबको पता है, it is the process of going within and connecting with our supreme power, connecting with our own self. किसी भी पर्सनालिटी, बाहर की पर्सनालिटी या बाहर के अपीयरेंस से अफेक्ट नहीं होकर, बट हमारे जो अंदर ये एसेंस है, हमारे अंदर जो ये डिवाइन पावर है, उससे कनेक्ट करना। मतलब एक ऐसा समय जब आप अपने हैंड्स को, अपने हार्ट बीट को फील करते हो विथ योर आईज क्लोज, इट्स योर ओन टाइम विथ योर ओन सोल। nobody else is there, you're not thinking कि दूसरे मेरे बारे में अभी क्या सोच रहे होंगे, right? When you are actually focusing or within, right? So it's the journey of going within, it's the process of going within. And definitely it allows us to reflect upon what our body, mind and intellect needs for a fulfilling life. हमें अगर ये लाइफ अच्छे से जीनी है, बहुत खुश होकर जीना है, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो हम सेल्फ अवेयर जितना ज्यादा होंगे हम समझ पाएंगे, हम अपने थॉट को समझ पाएंगे, हम अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज में, तो हम वो समझ पाएंगे, हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि ओके, ये पर्टिकुलर सिचुएशन हुआ है तो ये क्यों हुआ है। एंड जो हमारा अंदर का जो नेगेटिव चैटर है, इनर चैटर, वो सारा हम कहीं पे उठा के हटा देंगे, राइट? एलिमिनेट कर पाएंगे हम उसको। हम इससे क्या होता है, बेसिकली आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज होता है और आप रेडिएट करने लगते हैं पॉजिटिवली। सेल्फ अवेयरनेस जो है आपको बहुत काम रखता है, आपको बहुत कंपोज रखता है, और साथ साथ कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि हमारी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे ही माइंड का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। एवरी लिटिल थॉट यू आर थिंकिंग इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। आप फिनेंशियली सोचो, आप अपने खाने के बारे में सोचो, आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचो, हर वो चीज जो आप सोचते हो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो। हम बहुत बार जब उदास हो जाते हैं हम कहते हैं उसने हमारे साथ खराब से बिहेव किया, बदतमीजी करी, मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था। बट एक्चुअली जब आप इनर रिफ्लेक्शन करते हो, अपने बारे में और ज्यादा समझते हो खुद को, तो आप ये समझते हैं ओके, कहीं ना कहीं ये डर था, एक थॉट था कि कहीं ये ना हो जाए। एंड दैट्स वाई we actually attracted it, because we all know, right, everything is energy.
मेरे थॉट एनर्जी है, तो जब एनर्जी तुरंत मैंने ये सोचा, वो एनर्जी इस तरीके से मूव करके यूनिवर्स में गई, और जो थॉट जहां पे मैच कर रहा था उससे अलाइंड वो लाकर हमारी लाइफ में एज एन एक्सपीरियंस डाल दिया। तो अल्टीमेटली हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं। हम ब्लेम करना क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम समझ जाते हैं कि अच्छा, इट्स एक्चुअली अ लर्निंग थिंग। अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, इट्स अ लेसन आई नीड टू लर्न, आई कांट ब्लेम अदर्स। सो दैट्स द ब्यूटी दैट मेडिटेशन गिव्स यू व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग विद इन। सो दिस सेल्फ अवेयरनेस जब आपको वो हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, आपको आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। सो आई एम अ लाइव एग्जांपल ऑफ मेनी मेनी थिंग्स व्हाई आई एम taking these classes with so much of conviction and credibility, because I have gone through it myself. तो मैं एक ऐसी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव पर्सन थी, जो अगर कोई दो इंसान वहां लड़ भी रहे होंगे तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के रो रही होंगी कि वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? मतलब लोग ये बोलेंगे कि हाँ, इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, एंड आई यूज्ड टू हैव गेट दोज रिमार्क्स आल्सो, whether it was college, whether it was school or anything I'm saying. तो every relationship, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, had a major impact on my heart. Major impact. हर बर्थडे को मैं स्पेशल करना चाहती हूँ थी, और हूँ डेफिनेटली आज भी। बट अगर स्पेशल नहीं हुआ किसी कारण से, तो मैं आज उदास नहीं होती हूँ, उस समय मैं सैड हो जाती थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर हाउ मच बैड आई यूज टू फील फ्रॉम विद इन, कि ये काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैंने वैसे कर लिया होता। तो क्या होता है, बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा रिग्रेट्स लाइफ में। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपके प्रॉब्लम शरीर में जो है, आपकी बॉडी में डिजीजेस शुरू होंगी। सो सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब मैंने कुछ सोचा और मैं दूसरों के सामने बोल पा रही हूँ। तो was I doing that earlier? The answer is absolutely no. No ways. I was a person who can't, मतलब who never used to say no to people. I knew कि शायद ये इंसान ऐसा एक रिलेशनशिप है जो मेरा कहीं ना कहीं मेरी बातों, क्योंकि मैं मना नहीं करती इसलिए वो मेरा फायदा उठा रहा है। वी नॉर्मली यूज दिस सेंटेंस, राइट? हम कॉलेज में भी रहते हैं तो हम बहुत बोलते हैं, देखो लोगों को फायदा मत उठाने दो अपना। बट एक्चुअली हम उस तरीके से सोचते थे, और मुझे दिखता था सब कुछ, उसके बाद भी मैं ना नहीं कर सकती थी। वाई? बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट थिंग कि अगर मैं ना बोलूंगी तो दूसरों को बुरा लगेगा, एंड मैं किसी को बुरा फील नहीं करा सकती, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट इट। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज आई कांट से नो। तो क्या हो रहा है, मेरा माइंड, बॉडी और सोल जो है, क्या वो अलाइंड है? क्या वो कोहेरेंट है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। तो जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल जो है वो कोहेरेंट नहीं होगा, तो क्या होगा? लाइफ में स्ट्रेस आएगा, सिंपल। एंड ये स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? बीमारियां होंगी, जैसे माइग्रेन हो गया, जैसे वर्टिगो हो गया, जैसे एनीथिंग यू जस्ट थिंक अबाउट इट। कभी टमी में पेन हो रहा है, कभी नेक वो हो रहा है। एंड आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ थ्रोट कंजेशन। व्हाई? बिकॉज सी, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, थ्रोट इज अ प्लेस विच इज अ कम्युनिकेशन सेंटर। मतलब जो दिल की बातें मैं बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, राइट? तो क्या होगा, यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा, यू विल हैव थ्रोट इश्यूज। एंड देन उसके बाद हम फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम पिल्स लेते हैं, बट हम अपने इमोशंस पर काम नहीं करते। सो सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू कम्युनिकेट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जेंटली बट फर्मली। मतलब अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी बातों से दूसरों का बात जो है वो अलाइंड नहीं है, बट स्टिल मैं प्यार और कंपैशन के साथ अपनी बात दूसरे के सामने जरूर रखूंगी, क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी है कि अगर मैं नहीं रखती हूँ तो शायद ये चीज हो सकती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी बात जरूर रखूंगी। साथ साथ मैं उसके साथ एक्सपेक्टेशंस जो है कि मैं अपनी बात रख रही हूँ तो तुम मेरी बात मानो, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम है सिर्फ अपनी बात रखना। दूसरा इंसान अगर वो उसका टाइम है वो करने का, तो वो डेफिनेटली करेगा, अदरवाइज मैं परेशान होंगी। बिकॉज हम लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी एक खूबी है, दैट जब हम कुछ नई चीज सीखते हैं ना, हम तुरंत सिखाने लग जाते हैं। हम उसे ठीक से अभी ग्रहण भी नहीं करा, बट हमने तुरंत है कि हम सीख रहे हैं तो दूसरों को भी चलो चलो बताते हैं, जल्दी से बताते हैं। तो जब मैं मेडिटेशन सीख रही थी एंड आई स्टार्टेड सीइंग द बेनिफिट इन माय थिंग, सो आई हैड दैट कंपल्शन एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड फ्रॉम विद इन कि मैं कर रही हूँ बट मेरे घर पे कोई नहीं कर रहा मेडिटेशन। ठीक है। और मैं जब देखती थी कि मेरी बहन या मेरे भाई या कोई भी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, एंड आई कैन सी वेरी क्लियरली कि दिस इज व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, और ये समझ नहीं पा रहे, और इस तरीके से उनकी लाइफ में हो रहा, और ये पैटर्न बनता जा रहा है, तो मैं खुद को वो करती थी कि मेरा सीखने का फायदा ही क्या हुआ, जब वो मेरी बात ही नहीं मान रहे।
जब मैं उनको चीजें कह रही हूँ और 2 दिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मेरा ये सब सीखने का फायदा क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? अगर मैं अपनी फैमिली को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, उनको जॉयफुल नहीं कर पा रही हूँ. So what was I doing? Actually, I was attaching my entire thing, expectations to the outcome. That if I'm learning meditation, which means my family should benefit. मैं तो benefit कर ही रही हूँ, but they should benefit. और वो should के चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत परेशान किया. Until the time I learned a lesson that no, it's actually their journey. My sister, my brother, my parents, everybody is different. उनकी अपनी जर्नी है. मेरा काम है उनको बताना जो मैंने सीखा है, जो मुझे बेनिफिट हो रहा है. उनका जब समय आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे. And I'm so glad, I'm telling you that I mean my parents, both in-laws and my parents, both the families, they are watching it right now. And वो पिछले जब ये बैच शुरू हुआ उस दिन से वो लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं. तो दैट्स लाइक माय लाइफ टाइम अचीवमेंट. अगर मेरे पेरेंट्स बोथ साइड के अगर वो बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं एट दिस एज, राइट, 70+, सो आई मीन थिंक अबाउट इट. तो हम लोग क्या है उनके सामने फिर? दे कैन मेडिटेट फॉर 40 minutes, देन व्हाई कांट वी? सो इट्स अबाउट द मोमेंट आई ड्रॉप्ड माई एक्सपेक्टेशंस कि मतलब जब उनका समय आएगा तब करेंगे, तो समय आ गया. थोड़ा समय लगा, मैंने सब्र रखा, मैंने पेशेंस रखा, बट वो समय आ गया. आज वो इस चीज को समझते हैं और इस चीज को फॉलो करते हैं. तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको कि जब आप अपना एक्सप्रेस करने लगते हो तो आपको ये साथ साथ अटैचमेंट जो है आउटकम का, कि मैं एक्सप्रेस तो कर रहा हूँ बट तुम्हें ये करना पड़ेगा, वील हैव टू ड्रॉप दैट. एंड स्पेशली विद आवर किड्स. तो हम क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं हम समझते हैं कि सबकी जर्नी अलग है, राइट. और हम अपने जो भी नॉलेज है, विजडम है, हम बिना डर के लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस पर्सपेक्टिव से कि ठीक है हमारा काम है बताना, और जितना हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, बट हम उनकी जर्नी नहीं जी सकते. दैट इज देयर ओन जर्नी. वी विल हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. We can help somebody to breathe, but can we breathe on behalf of them? The answer is no, right? हम ब्रीथ करेंगे तो हमारी लाइफ बढ़ेगी ना. तो उसी तरीके से जब हम किसी को मेडिटेशन जबरदस्ती उनके बिहाफ पे मेडिटेशन नहीं कर सकते, ना हम उन्हें जबरदस्ती करा सकते हैं. हम सिर्फ उन्हें प्रोसेस बता सकते हैं, फायदा बता सकते हैं. जब उनका समय आएगा तब उस समय वो डेफिनेटली वो स्टार्ट कर देंगे. सो मेडिटेशन इस अवेयरनेस के साथ हम लोगों को सिचुएशंस में बहुत ही कामली रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाता है. तो आप जो गुस्सा हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, ये सारी चीजें धीरे धीरे हट जाती, राइट. एंड देन जब हम ये 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक यू टू द डिटेल स्लाइड. सो साथ साथ ठीक है. So here you can see, self-awareness, that you are now aware about your thoughts, feelings, and reactions. We discussed that we start responding rather than reacting. Why? Because we are in the present moment. We are always getting into a mindful thinking. अभी मैं सोच रही हूँ उसका क्या impact होगा, तो मुझे क्या सोचना है वो भी मैं सोच के सोच रही हूँ. माइंड माई सेंटेंस, ओके. सो मैं कह रही हूँ मुझे क्या सोचना है वो भी मैं सोच के सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेरे सोच से, मेरे बोलने से, मेरे एक्सप्रेशन से ही मेरी दुनिया बन रही है. I am the creator of my own life. Nobody else is the creator of my life. So if something goes positive, if something goes challenging, it's actually I am creating it. Nobody else is creating it. तो जब ये अवेयरनेस आ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने अंदर का सेल्फ वर्थ समझ आता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, एंड इनफैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज माई सेल्फ. उसके बाद ही सब लोग आते हैं, राइट. And then when you are filled with so much of mindfulness, you automatically get into a elevated emotional state, which means higher vibrations, and you start understanding yourself. And once you start understanding yourself, you start understanding people around, right. What is happening is that you start gaining balance in your expression. कि हाँ मुझे अभी रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है. टेक अ पॉज, ऑब्जर्व योर ब्रेथ. ओके, इट्स ओके, केओटिक है सिचुएशन बहुत ज्यादा, दूसरा इंसान आपके ऊपर बहुत चिल्ला रहा है, तो हाउ डू आई रिस्पॉन्ड इन सच अ सिचुएशन इज बेसिकली आई से that your mood is not good right now. I don't think so you are in a state to talk. Once you are balanced and calm, then we'll definitely discuss on it. But मैं उस argument से उस समय के लिए हट जाऊंगी. It's not that I'm running away from a situation, not at all. I'll deal with it. But that, when a person is at the very very angry, let's say, or very very anxious, that's not the time to kind of get into a balanced communication or expression with that person. So it's always better you respond to that situation later on,
when the thing is thing. I still remember जब मैं White Hat Junior में काम कर रही थी, तो there was a discussion on, there was a training on email communication, in fact good communication tips, right? So वहां पे हम यही कहते हैं, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप क्या करो, आपके बॉस के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है आप अपने सारे के सारे एक्सप्रेशंस बाहर निकालो, राइट, एक्सप्रेस कर दो उसे. सो यू कैन एक्चुअली राइट अ मेल टू दैट पर्सन, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, बट आप वो मेल कभी भी उस समय सेंड मत करो. सेंडिंग द मेल immediately is basically you are reacting, but just store it, save it in your folder, and later on when you are feeling balanced, when you are feeling calm and peaceful, तब फिर वापस आके उस मेल को पढ़ो, and then you will actually smile at that mail which you have would have written. क्योंकि एक बार वो ईमेल चला गया तो डेफिनेटली उससे रिलेशनशिप सिर्फ खराब होगा, बिकॉज यू हैव रिएक्टेड, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन. एटलीस्ट यू हैव दैट अवेयरनेस, राइट? सो हम उतना समझने के बाद हमें ये समझ आता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉन रेलेवेंट राइट नाउ, सो वी स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑल द नॉन रेलेवेंट थिंग्स. वी आर वेरी वेरी ट्रूथफुल व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग, बिकॉज कोई डर ही नहीं है ना. हम झूठ कब बोलते हैं? जब हम डरते हैं. हम बचपन से बच्चे झूठ कब बोलना शुरू करते हैं? उन्हें पता है अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं और मैंने अभी जाकर बता दिया तो मेरे पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, मेरे पेरेंट्स, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्म करते हैं किड्स को, बहुत ज्यादा ज्यादा कमेंट करते हैं. तो ये सब अवॉइड करने के लिए बच्चा क्या करता है? वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसके अंदर वो डर है. तो जब आप मेडिटेट करते हो आपके अंदर से हर डर खत्म हो जाता है. फिर आप ब्यूटिफुली अपनी जो भी चीजें हैं, जिस भी इंसान से है, उससे आप अपनी चीजें शेयर कर पाते हो, right? And you are always being truthful, you are being very very selfless. आपको ये नहीं है कि मेरा अल्टीरियर मोटिव क्या है, आपको ये लगता है कि ठीक है उससे उसका भी गेन होगा, दुनिया का भी गेन होगा, इट्स ओके, दैट्स फाइन. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मी, because once you start meditating, you know at least that it's we are all one, वी आर नॉट सेपरेट, वी आर ऑल वन. हम सब एक जैसे हैं, उसी ईश्वर का अंश है हम सभी के अंदर, उसी भगवान का अंश है, वो सुप्रीम पावर का अंश है, वही सेम एनर्जी है हम सबके अंदर. तो डेफिनेटली हम सब सेम है, हम में हमारी सिर्फ आकार और शेप और ये सब चीजें डिफरेंट है, बट एक्चुअली हम लोग अंदर से बिल्कुल ही सेम है, राइट? और दूसरा क्या होता है कि आप जब एक्सप्रेस करते हो, आप प्यार और कंपैशन के साथ करते हो, लव एंड कंपैशन के साथ. तो क्या होता है कि एक जो सिचुएशन होती है ना कि मैं सही और तुम गलत, वो वाला सिचुएशन बिल्कुल ही लाइफ में नहीं आता. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट. हम नॉर्मली कोई चीज बताते हैं तो हम इसलिए बताते हैं कि सुनो, क्योंकि मुझे पता है तो मैं सही हूं और तुम गलत हो, तो ये करो. But then, when you meditate, you at least understand that, okay, I'm expressing things so that the person is aware about it, but I'm not going to control the result, not at all, right? So no need to prove the point. So from this, we'll just move on to inspiration. Now, what is this beautiful, beautiful word? I'm really like, I really love this word, because inspiration का मतलब है कि जब आप अपने बारे में अवेयरनेस पता कर लेते हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं, और फिर आपके अंदर वो फुलफिलमेंट आता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग. एंड देन योर फुलफिलमेंट, योर जॉय, योर लव, योर कंपैशन एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन योर एंटायर पर्सनालिटी. And when you go outside and meet people, they also become inspired, and they just give you a compliment that, okay, Shweta, I've been learning so much from you. And it gives me so much of joy from within, that if मैं अगर किसी को थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी का अगर मैं एक जरिया बन पाई, एक टूल बन पाई, एक इंस्ट्रूमेंट बन पाई, तो what more do I need in my life? Because I always keep telling, right, that the purpose of this lifetime is to spread love, और लोगों को उस लव से कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाना, उनको अपने माइंड स्पेस से, जो वो 100% माइंड यूज करते हैं, उनको उस माइंड से अपने हार्ट तक, उनके हार्ट तक लेके जाना मेरा काम है, बस, दैट्स ऑल. फिर वो सब कुछ खुद कर लेंगे. आई डोंट वांट पीपल टू डिपेंड ऑन मी टोटली. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई लव दिस मेडिटेशन ऑल्सो, because this is your breath, this is your time, this is your life. What am I doing? I'm just telling you a couple of things, और फिर खुद करना है आपको. अगर आप करोगे तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खुद से, खुद अपने हाथों से आप उसको इम्प्रूव कर रहे होगे, राइट? अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझदारी से. जब आप ये करते हो तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में सडनली एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन आ जाता है. आप खुद मोटिवेटेड रहते हो, आप लोगों को मोटिवेट करना शुरू करते हो. और इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे टास्क, अगर कोई बहुत ही मंडेन टास्क भी है ना, आप उसको बहुत खुश होके करोगे.
उससे क्या होगा कि फिर आपका सारा एक एक डिटेल आप ध्यान रखोगे, गलतियां नहीं होंगी, आपको पता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है, तो आप जो भी चीजें करोगे पूरा पैशनेटली करोगे। और अगर जॉय और पैशन के साथ किसी भी काम को करो तो उसका आप रिजल्ट सोच सकते हैं कैसा होगा। इट विल ऑलवेज बी इंस्पायरिंग अदर्स। हम कहते हैं ना कि फ्लावर्स में खुशबू होती है, तो फ्लावर्स खुद के लिए खुशबू नहीं रखते, वो एक्चुअली पूरे यूनिवर्स के लिए रखते हैं, राइट? You just go and you smell the flower and you just feel so good from within. It's like this, that we are all light, we have to glow from within. और जब हमारी लाइट से पूरी दुनिया इस तरीके से ग्लो कर रही होगी तो हमें कितनी फुलफिलमेंट होगी, हमें कितनी खुशी होगी, right? So taking that responsibility naturally, that I'm a part of this nature, I and everybody, I and you are actually one, we can say that, right? And that's how we start inspiring people. We take ownership of whatever we do. We just, life ना फ्लो की तरह जाता है। जैसे हमने डिसाइड किया आज शाम को ये स्लाइड्स देने, बट सडनली ऐसा कुछ होता है कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स सिग्नल आता है कि नहीं, आज का टॉपिक ये नहीं, ये होना चाहिए। सो वी एक्चुअली शफल द स्लाइड्स, राइट? वी डोंट से कि नहीं, आज तो हमने यही प्रिपेयर किया था, हम कुछ और कैसे बोलते, right? And believe me, I made so much of notes before the session, because you need to be at your best when you are actually taking a class. But then क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो then I speak from my heart, एंड पॉइंट्स शायद इधर उधर हो जाते हैं, सब कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, बट जो बोलना है वो डेफिनेटली वो बोल पाते हैं, राइट? एंड दिस इज हाउ व्हेन यू आर इंस्पायर्ड, थिंग्स स्टार्ट्स टू फ्लो। यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग, एक्चुअली आप फ्री फ्लो वाले स्टेट में हो जाते हो। आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेते हो कि मेरी लाइफ में जो भी है इट्स बिकॉज ऑफ मी, सो आई हैव टू लुक विद इन एंड करेक्ट एनीथिंग अगर मेरे को लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। And then finally you are the delight, you are the life of everyone who's there in your life. Okay. And then let's talk about empathy. Empathy is what we were said about this, that empathy is to put yourself in somebody other's shoes, right? उसकी जगह पर खुद को रख के देखो कि वो किस चीज से गुजर रहा है या गुजर रही है, right? तो अभी क्या है कि जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हो, आप एक्चुअली खुद ही जानते हो कि एक कनेक्शन है ना, एट द सोल लेवल। तो आप दूसरों को समझने लगते हो, आपको खुद को उसकी जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप और वो सेम हो बिल्कुल। तो आप खुद फील कर जाओगे कि किसको क्या परेशानी है, और उसको ज्यादा समय चाहिए किसी चीज के लिए, उसको अच्छे से आप समझने लगोगे। देयर विल नॉट बी एनी कंप्लेंट्स, देयर विल नॉट बी एनी जजमेंट। सो लेट्स से एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही नेगेटिव है, राइट? सो इनिशियली क्या होता है, बिफोर मेडिटेशन, बिकॉज यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, आप हमेशा कंप्लेन करते हो, यार कुछ भी कर लो ये बदल ही नहीं रहा, कुछ भी कर लो ये नहीं बदल रहा, आई रियली डोंट नो मेरी लाइफ में कितना नेगेटिव उसका इम्पैक्ट हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? यू आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट थिंग। बट नाउ यू एम्पथाइज विद दैट पर्सन। सो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया कि जिसके कप में जो चीज है वो वही कप से किसी को सर्व कर पाएगा, राइट? तो अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है हर बात में कोई अगर बहुत गिल्ट में रहता है, तो व्हाट डू यू थिंक उनके कप में क्या है? उनके लाइफ के कप में गिल्ट है या एंगर है, राइट? देन यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद दैट पर्सन। सो व्हाट आई डू, when I see such a person, I actually start sending love vibes to that person, because उसके लाइफ में प्यार की कमी है ना, तभी तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। उसकी लाइफ में डेफिनेटली प्यार की कमी है, उसकी वजह से वो इतना गिल्ट में है। सो गिल्ट हुआ, एंगर हुआ, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। जब आप प्यार से धीरे धीरे दूर होते जाते हो, जितना दूर होते हो, बिकॉज लव इज गॉड, गॉड इज एनर्जी, लव इज एनर्जी, राइट? सो आप जितना दूर होते हो, आपकी लाइफ में अलग अलग नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, उसको इस चीज की कमी है, तो चलो लेट्स सेंड लव, बिकॉज लव इज सुप्रीम फॉर मी। तो मैं वो करती हूँ रादर देन जजिंग द अदर पर्सन। एंड डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ में फेलियर कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। इवन इफ आई एम गोइंग एंड अ डॉग comes and then bite my leg, let's say, that is also an experience. You just can't say कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, हर चैलेंज मेरे साथ ही क्यों होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर येट टू लर्न द लेसन, कि ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, हर चीज में आप स्टक क्यों हो रहे हैं। सो लेट्स लुक एट दैट लेसन, and then the moment you understand कि, okay, this is my lesson, then immediately you evolve and that thing will stop happening in your life. Again, a live example is sitting in front of you for that, right? So we should allow failures to happen in our life. We must discuss this with our kids also, and we must take their failures and they tell them कि ये जो हुआ है इसलिए हुआ है, not because so basically what is the lesson out of that failure?
tell them about that and ask them to do it from practice it from day one, right? एंड देन फाइनली आप क्या होता है जब आप एम्पथाइज करते हो तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर आता है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो पूरी सोसाइटी में किसी से बात नहीं करता है, बहुत ही नेगेटिव है, वैसे लोग भी आपके साथ बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही ट्रस्ट, बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। वो दूसरों के सामने नहीं करेंगे बट वो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हो जाएगा, राइट? So this is how, when you drop all the judgments, all the complaints from your life, everything turns beautifully in your life. Okay. And what happens then, from a follower you actually suddenly become a leader. You won't even realize कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो गई एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि आप लोगों के लिए एम्पथाइज एनीवेज कर रहे हो और फिर आप उनको सोल्यूशंस देने लगते हो। आपको लगता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, let me take the initiative and let me resolve this as well. You become so confident, you are so credible, and ultimately you become a natural leader, right? एक छोटे से ग्रुप से लेके you never know कि to what level you can go actually as a leader if you have that kind of this thing कि मुझे इस level पे जाना है, तो you can always become a very very good leader, because if you start meditating, तो आप देखो अगर तो आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर तरीके से आपकी अपलिफ्टमेंट होती है जब आप मेडिटेशन करते हो एंड यू बिकम सो सो कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग थिंग्स, राइट, टू द एंटायर वर्ल्ड. So that's how meditation and emotional intelligence goes hand in hand. It enables individuals to inspire, connect and lead with authenticity. तो आपके अंदर वो फेकनेस, वो सारी चीजें रहेंगी नहीं, and that's how you'll start evolving in life. So this is it for this thing. So just look at all the relationships in your life, I would say. And one of the points which I forgot in the inspiration slide is like, if you start working on something which you love, then your life becomes amazingly fulfilled. This is what I'm doing right now, right? So I'm helping people to look within and connect with their heart space. So which means, this is what my purpose is. And through meditation, through life skills, through Zentangle, whatever I'm doing, I'm actually helping them to just move into that corner of love, peace and joy, right? So I just love whatever I do. So similarly, just look at your profession, look at your things, what you're doing. Are you enjoying it to the fullest? Do you think it is aligned to the purpose of your lifetime? And then उस तरीके से आप सोच कर आप वो करो। और आपका अगर मान लीजिए कि आप अभी 70s में हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए थी बट मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, अभी समय है, कीजिए। बिकॉज सी अल्टीमेटली हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने ईयर्स हैं। तो हम ये क्यों बोलते हैं जब किसी की तबीयत खराब होती है कि अब नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है? तो जब आप पॉजिटिव होते हैं तभी भी वैसा सोचो। ये सोचो कि मतलब वो नेगेटिव ही क्यों जरूर, हमें नहीं पता कि हम 80 साल तक जिएंगे, हम 100 साल तक जिएंगे, वे रियली डोंट नो। या 5 साल या 10 साल या 20 साल, कुछ नहीं पता है ना। तो आप एक एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए और आपके जो जो काम रह गए हैं वो आप अब शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। एंड जस्ट लुक एट द वे थिंग्स विल चेंज। बिकॉज I still remember, Chandra sir in one of the sessions he shared one of the stories जहाँ पे मैं इनफैक्ट कल लूंगी because it's already 10:05. I'll take start the session with that story tomorrow. But yes, coming back to the relationships, definitely please pay importance to all the relationships. और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा problematic relation है तो please look within, what is that one thing in you which is actually attracting that relationship in your life. And the moment you drop that judgment, drop that statement, drop that thought, या तो उस इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी या फिर आपकी और उसकी एनर्जी अलाइन नहीं होगी, तो दैट पर्सन विल मूव अवे फ्रॉम योर लाइफ। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट पर्सन विल मूव अवे फ्रॉम योर लाइफ, व्हिच मींस आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा उस मूवमेंट का, right? So you will be anyways joyful from within. So this is how meditation helps us in beautifully in all the aspects of life. So let's get into meditation right now. In case you have queries, we can connect later after this session, or you can always call me 101, because at times it happens that you're not able to share it in a group. So absolutely fine. You can always call me, and at least whatever जितना मुझे knowledge है, जितना मेरा wisdom है, उस हिसाब से मैं जितना हो सके मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी, डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स गेट इनटू मेडिटेशन. I think, yeah, so at least the people whom I'm seeing right now on Zoom, they know about the process. So we'll get into heart elevation process with your hands on your heart, and just follow the voice guided meditation of Chandra sir. And then once we do it for 2 minutes, we move on to the
breath mindfulness meditation, which is Anapanasati meditation, wherein the only difference is basically in heart elevation process, you have to take deep, long, relaxing breaths. And जब आप breath mindfulness आनापानासती meditation आओगे तो फिर आपको अपने normal natural breath को observe करना है. That's all. Okay. No forceful inhalation, no forceful exhalation. 3 locks. We know that eyes are closed, fingers are clasped, and then your legs are crossed. So these are the 3 locks. So let's get into meditation. Let me just play the track. Dear friends, dear masters, keep your hands on your chest area with your eyes closed, specs removed, with your attention on your sacred heart. Can you feel your beautiful heart? Feel the seat of all emotion, which is nurturing all life with its energies of love, joy, gratitude. Come on, friends, connect with your heart center. Feel the beat, the rhythm of your heart, your primary connection into this quantum field by your experiences of life. Recollect an experience from your past, from your present, where you felt enormous love, gratitude, compassion, and relive that moment and feel that energy. Relive that moment of love, of joy, and feel that energy inside your beautiful heart.
all deeply interconnected. Deep inside, we are specks of energy, intricately connected with each other. Love is the way. Gratitude, compassion are all the ways to become one again, to become coherent with all things and everybody. And allow yourself to direct that energy onto every corner of this planet Earth for it to be received by the needy. Where your attention goes, there the energy flows. And slowly, let's go into breath mindfulness meditation. With your eyes closed, fingers into fingers, hands rested comfortably in your lap. Observe your normal, natural in-breath and the out-breath diaphragms. Our goal is to empty the mind. Our goal is to merge into that greater emptiness, that quantum field of connectedness. When we observe our breath, the mind becomes empty. Be with your breath. No forceful inhalation. No forceful exhalation.
into your breath and allow yourself to become totally empty of all thoughts in your mind. As your mind is becoming empty, we allow our body to function with great coherence. We channelize all that energy into the generous present moment. We become very mindful. We increase our power of thought. Be with your breath, one with that in breath and the out breath. It's natural to have thought. When you recognize you are thinking, go back to observing your breath, dear friends, and allow yourself to slowly become empty of all thoughts in your mind. Become aware of the emptiness inside of you, all around you, as you merge into your breath.
Allow yourself to experience that emptiness, that blackness, that void. Spreading far and wide. Beyond your room, beyond this planet, stretching into the endless depths of this universe. Stay aware of it, away from your body, away from your life. All emptiness is energy. That infinite field of quantum energy with limitless opportunities and possibilities. The longer you stay aware of this emptiness, where there's no body, where there's no thing, the more you become of it, the more you receive from it.
This is the field of unlimited. The field of wholeness, oneness. Everybody and everything are connected here in this field of energy. The longer we stay aware of this emptiness, that void, that field of light, the more coherent we become with each other. The more coherent we become with our existence. If you find yourself distracted in thought, go back to observing your breath, dear friends, and allow yourself to find that emptiness all around. Friends, at this time, let's express gratitude. It's truly an honor and privilege to be experiencing this life at this time of history. Can you be grateful to all things and everybody? Be grateful to your parents, to your teachers, your mentors. Your gratitude to everybody in your life, your family, your friends, your colleagues, relatives, partners.
Give thanks to this grand nature, the bird, the fish, and the animals, and to everything we use, the technology, the system, the companies, the governments that support our life. Your gratitude to yourself and to this intelligent quantum field. Gratitude is the ultimate state of receivership. I can rest. I Thank you, thank you, thank you. Thank you, Manisha. So just relax and let your body get repaired today with this beautiful meditation and get a good night's sleep. Okay. Thank you, Priyanka. And see you all tomorrow with a new topic in discussion, wisdom talk, and followed by a meditation. So thank you so much once again. Good night.